এই মুহূৰ্তত আমাৰ দৰ্শকসকলক দিবলৈ লৈছো এক ব্ৰেকিং নিউজ। কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰামায়াই বিজেপিয়ে অযুক্তিকৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কৈছে তেওঁলোকে কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু কানাড়া পতাকা প্ৰদৰ্শনৰ বাবে অনুমতি লাভ কৰিছে। ৰাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে জিলা প্ৰশাসনে ক্ষীপ্ৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে নিৰ্বাচনৰ আশে-পাশে। সিদ্ধাৰামায়াই হিন্দু হিচাপে সকলো ব্যক্তিৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমৰ কথা দৃঢ়তাৰে সহাৱস্থান আৰু সহনশীলতাৰ প্ৰতি তেওঁ দায়বদ্ধতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। অৰাজনৈতিক ঘটনাক ৰাজনৈতিক দৃশ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ অভিযোগত বিজেপিয়ে তদন্তৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ তীব্ৰতৰ হৈ পৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য সম্প্ৰীতি আৰু ঐক্যৰ তাৎপৰ্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে। আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ উঠাসৰ মাজত অন্তৰ্ভুক্তিৰ সূত্ৰপাত কৰিছে। ৰিপৰ্ট আমাৰ আশা। Sir, but then what is the situation right now? Like in Mandya also, in Bangalore also, they are protesting in a big way. No, my point is, why they are instigating? What for? Let me know. What for they are instigating? Why they are instigating? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ದೇನು ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಏನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಯಾಕೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಯ್ತಿದ್ರು? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ, ಹನುಮ ಧ್ವಜ ವಿರೋಧಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಇದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಏನು? ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಹಿಂದೂ, ಬಟ್ ಐ ಲವ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜಾ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ আমার আশা।